सो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो बेसिक कंसेप्ट है और उसके अंदर के जो बेसिक टर्म्स है वो डिफाइन किए थे। तो अभी उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमको वो समझने में आसानी हो कि एग्जैक्टली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और वो किस तरह से निकाला जाता है। एक ओवरऑल कंसेप्चुअली कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन होते क्या है और वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं और किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। उससे पहले एक बार फटाफट हम ये देख लेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम, राइट। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो एक बार फटाफट देख लेंगे। Okay, so this is what we have discussed last time. So basically, we have seen that whenever a particle performs the circular motion, uh, there are three terms defined in the case. In that case, sorry, wait, 1 minute. Yes, this is what we have seen last time. Uniform circular motion and non-uniform circular motion. These are the two different kinds of circular motion. And what is circular motion basically? तो हमने देखा था कि the motion of a particle along the circumference of a circle called as the circular motion, and the motion of the particle along the circumference of a circle with constant speed is called as the uniform circular motion. But the motion of particle along the circumference of a circle with variable speed is called as the non-uniform circular motion. Okay, so in uniform circular motion, the particle goes on covering equal angles in equal intervals of the time. And in case of non-uniform circular motion, on the other hand, the particle covers different angles in equal intervals of the time. And that's why it's called as non-uniform circular motion. Let us proceed further. उसके भी आगे जाके हमने देखा था last time कि in circular motion there are the three concepts defined here. That is, first is the radius vector, दूसरा है angular displacement, तीसरा है angular velocity और चौथा होता है angular acceleration. तो ये जो चार concepts है, तो ये सबसे important concepts है circular motion के अंदर जो define किए जाते हैं और इन चारों concepts के ऊपर ही बेस पूरा chapter जो है वो based है. तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से. और इससे भी आगे जाके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज डिफाइंड एज द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये उसका डेफिनेशन है. सो इट्स ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन. सो उसका जो फॉर्मूला है वो ये बनता है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर. एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली? The angular velocity is nothing but the rate of change of angular displacement. It's called as angular velocity. So we can also say it as the rate at which the angular displacement is traced with respect to time, or simply we can say that the angular displacement per unit time is called as the angular velocity. In the same way as linear velocity, you must have been heard about it. Linear velocity is actually defined as the displacement upon time, correct hai? So in the same way here, in case of the circular motion, the angular displacement upon time is defined as the angular velocity. And angular acceleration, so angular acceleration, we say that there is angular acceleration only when angular velocity is changing, either increasing or decreasing. Then and only angular acceleration will exist. Otherwise, if suppose omega remains constant, अगर मान लो ओमेगा जो है वो अगर कांस्टेंट ही है तो उस केस में नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. सो इन दैट केस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, नो डाउट. तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा. बट इफ सपोज द एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is defined as the angular acceleration. In the same way as linear acceleration, how it is defined? The rate of change of
linear velocity, dv by dt उसको हम डिनोट करते हैं. तो dv मतलब change in velocity and dt मतलब time interval, right? So the rate of change of linear velocity with respect to time is defined as angular acceleration. So in the same way here, the rate of change of angular velocity is actually called as the angular acceleration. And this average angular acceleration can be found out by this formula, that is alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon t, where omega 1 is going to be the initial angular velocity and omega 2 is going to be the final angular velocity, and the t is going to be the time for that change to take place, right? And then we have seen the concepts of period and frequency. What is the period of revolution of a circular motion? Period of revolution is nothing but the time taken by the particle to complete one revolution. करेक्ट है? तो किसी भी पार्टिकल को एक पूरा चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. इट कैन बी एनीथिंग, like it can be very small also or it can be any very large also, just like इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो सोचो कितना हाई स्पीड में घूमता रहेगा, तो इसलिए उसका जो पीरियड है वो बहुत छोटा हो गया, नो डाउट. और एट द सेम टाइम अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए सन के आसपास कितना टाइम लगता है, तो हम ये देख सकते हैं 365 days और 1 year we can say. So every planet in this solar system has its own period of revolution. ठीक है ना? किसी का जैसे जुपिटर का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है 12 साल, तो 12 years it takes to complete one revolution around the sun. Even some comets are there, जैसे तुमको पता होगा हेलेस कॉमेट जो होता है या दूसरे अलग कॉमेट्स होते हैं. तो कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो एक बार अगर हमको दिखते हैं सन के ऑर्बिट के नजदीक आते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट 86 years के बाद हमको दिखाई देंगे. तो उतना समय तक वो घूम रहे होते हैं, तो सन से बहुत दूर चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर आते हैं तो हमको वो दिखाई देते हैं तभी. तो ये सब चीजें जो है वो हम समझ सकते हैं. द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज सिंपली द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, फुल रिवॉल्यूशन, राइट? And frequency of revolution is nothing but the number of revolutions made per unit time, number of revolutions made per second, or number of revolutions made per minute, or number of revolutions made per hour will be called as the frequency. Obviously its unit will be per second only, तो सेकेंड ही हमारा टाइम का बेस्ट यूनिट है, तो इसलिए फिर हम उसको पर सेकेंड मतलब ये हर्ट्ज में उसको मेजर करते हैं, और टाइम पीरियड को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में, obviously. Yes, and these are some relationship between the period and frequency, because we know that the speed is always equal to distance upon time, correct है? तो speed is equal to distance upon time, ये बात अगर हम यूज करते हैं तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि speed कितना है, v है, और at the same time this speed must be equal to the distance which is 2 pi r, and that is to be divided by capital T, that is the time taken by the particle to complete one full revolution, which is nothing but the period of revolution. So if you want to find out this period, then we have to take it in this side, and velocity v has to be taken in the denominator in this side here, so that we can get it in the next step, that is t is equal to 2 pi r upon v. So this simple formula will give us the period. So किसी भी पार्टिकल का अगर पीरियड हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? सिंपली सर्कमफरेंस को उसके स्पीड से डिवाइड कर देना है, बस खत्म. एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कर दो उसको, तो अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. और यही पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम दूसरे एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, करेक्ट है? थीटा अपॉन टी. तो अगर ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलता है एंगुलर स्पीड विच इज ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू एंगल. व्हाट इज द फुल एंगल ऑफ अ सर्कल? वी नो दैट इट इज 2 पाई रेडियन, करेक्ट है? ये हमने कल भी देखा था. तो रेडियन में पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो हमेशा 2 पाई रेडियन से मेजर किया जाता है, एंड हेंस वी हैव रिप्लेस्ड दिस एंगल बाय 2 पाई हियर, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द फुल टाइम, दैट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कैपिटल T here. Once again, in order to find out this capital T, we'll have to take this T in that side, and omega has to be shifted in the denominator here in this side, so as to get this T is equal to 2 pi upon omega, which is the formula for period of revolution. And in the same way we can find out the frequency just by taking the reciprocal of this period,
दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, एक सिंपल सा मुझे सवाल पूछना है सभी को कि ये पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ये कोई आर्ग्यूमेंट्स द्वारा प्रूव करके दिखा सकता है? It's very simple thing, it's a common sense, but still I just want to ask anybody if you want to if you can prove that period is reciprocal of frequency by just simple daily life arguments or daily life examples. You can unmute yourself and speak directly instead of typing in the chat box because it will take time. Yes, anybody? How can we claim that period is reciprocal of frequency? We have understood what is the period of evolution. We have understood what is the frequency of evolution. But basic question is that how will you claim? Yes. Yes, Avian. अरे आंसर नहीं देने का तो अननेसेसरी माइक अनम्यूट क्यों करते हो? Yes, anybody else? Okay. See, I will like to give two examples. एक डेली लाइफ एग्जांपल है, समझ लो ठीक से। अगर मान लो कि जैसे तुमको पता है ना कि कोई भी बस स्टॉप जो होता है, मान लो ये एक बस स्टॉप है, ठीक है। इस बस स्टॉप के ऊपर मान लो तुम खड़े हो और यहाँ से बस गुजर रहा है, ये सपोज रोड है, ओके। और हम पूछते हैं बस स्टॉप के ऊपर कि दूसरे लोगों को कि यहाँ पे आने वाले सपोज बस का फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है ना। तो अगर वो सामने वाला अगर बोलता है कि सपोज 15 मिनट में एक बस, सोचो ठीक से, हाँ, 1 बस इन 15 मिनट्स, ओके। तो उससे तुम क्या समझ के लेंगे? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस? व्हाट कैन वी से? फ्रीक्वेंसी ऑफ बस कैन बी सेड टू बी 4 बस पर आवर। बोल सकते हैं ऐसा? चेक करो ठीक से। 4 बस जा रहे हैं 1 घंटे के अंदर, क्योंकि 15 मिनट में एक बस जा रहा है ना, तो 15 मिनट में एक बस मतलब क्या? 15 मिनट में एक बस, आधे घंटे के बाद दूसरा, पौने घंटे के बाद तीसरा और 1 घंटे के बाद चौथा। तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर एक पूरा घंटा अगर पास हो गया तो उसके अंदर कितने बस जाएंगे? उस रास्ते से 4 बस गुजरेंगे, राइट है? ठीक है, तो ये हो गया। तो एक इसमें देखो, ये 4 बस पर सेकेंड, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये 4 को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, बराबर है। और जबकि यहाँ पे यूनिट जो है वो टाइम का यूनिट यहाँ पे आवर है, तो यहाँ पे भी हमको 15 मिनट में एक बस जाता है, तो उसको हमको आवर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 15 मिनट, या उसको हम 1/4 आवर भी बोल सकते हैं, 1/4 आवर, इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड। समझा क्या ठीक से? देखो बिल्कुल सिंपल है। जब फ्रीक्वेंसी 4 था तो पीरियड कितना बन गया? 1/4 बन गया। चलो ठीक है। अगर तुमको बोला गया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस एट अ रूट इज सपोज 3 पर आवर, हाँ, पर आ रही है सपोज अभी, तो सोचो अगर 3 बस पर आवर ऐसा अगर फ्रीक्वेंसी है उसका, तो इसका मतलब क्या होगा? पीरियड कितना होगा फिर? कितने मिनट के बाद एक बस जाएगा? मतलब एक बस सपोज अभी चला गया, तो उसके बाद फिर से कभी आएगा बस, दूसरा बस? 20 मिनट्स के बाद, बिल्कुल है कि नहीं? तो क्योंकि 3 बस पर आवर मतलब क्या? 1 घंटे में 3 बस। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए फिर 60 मिनट को अगर 3 पार्ट्स में बांटो तो वो हमको मिलता है 20 मिनट्स। सो 20 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 1/3 आवर, करेक्ट है? 1/3 आवर। सो दिस 1/3 आवर इज गोइंग टू बी द पीरियड, करेक्ट है? सो इस तरह से हमको पीरियड मिल गया और फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। देखो फ्रीक्वेंसी जब 3 है तो पीरियड 1/3 है। फ्रीक्वेंसी जब 4 था तो पीरियड 1/4 बन गया।
और जब फ्रीक्वेंसी अगर बोल देते हैं 2 है, देखो ठीक से, फ्रीक्वेंसी इज 2, व्हाट डज इट मीन? 2 बस पर आवर, करेक्ट है। एक घंटे में 2 बस, मतलब एक बस कितने घंटे के बाद जाएगा? आधे घंटे के बाद जाएगा, बिल्कुल। अब ये आधा आधा घंटा, ये क्या हो गया? ये पीरियड हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अगर मान लो एक बस पर आवर, तो फ्रीक्वेंसी भी 1, पीरियड भी 1, नो डाउट। बट अगर बोला कि 2 घंटे के बाद एक बस जाता है, तो हमको बोलना पड़ेगा पीरियड इज 2, करेक्ट है, 2 आवर्स। क्योंकि एक बस चला गया, उसके बाद दूसरा बस कभी आएगा? 2 घंटे के बाद, बराबर। ठीक है, अगर 2 घंटे के बाद ये बस आएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी फिर कितना हुआ? हाउ मेनी बस पास पर आवर? एक घंटे में कितने बस पास होते हैं? क्या बोलना पड़ेगा हमको? जरूर 1/2, ठीक है, 1/2 बस पर आवर। इसका मतलब ये होता है कि बस इज पासिंग एवरी आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद एक बस जाने वाला है। हाफ बस पर आवर का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे के बाद आधा बस जाएगा और दूसरे घंटे के बाद बचा हुआ आधा बस जाएगा, नहीं, आधा आधा टुकड़े में नहीं जाने वाला वो तो एक ही जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे के बाद जाएगा। इसलिए बोलने के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी, एक घंटे में कितने बस जाएंगे? आधा बस जाएगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल in which we can understand how the period and frequency are just reciprocals of each other. Okay, sorry. Okay, yes. So एक एग्जांपल तुमको अगर पूछा, सपोज एक फैन है, फैन is rotating at a frequency of 180 rpm. Find its period and frequency. Can you do that? अभी पूछो आरपीएम माना क्या है? आरपीएम का मतलब होता है revolutions per minute. Remember, okay? Revolutions per minute मतलब ही RPM. So the fan revolves 180 times per minute, करेक्ट है। इमेजिन करो, एक मिनट में अगर ये फैन 180 बार अगर घूम जाता है, तो मुझे बताओ ये जो फैन है वो एक सेकेंड में कितने बार घूमता रहेगा? देखो 180 रिवॉल्यूशंस आर मेड पर मिनट ना, पर मिनट। अभी एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? ये तो उनको पता है ऑलरेडी, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, बराबर। तो 180 revolutions per minute means 180 revolutions in 60 seconds. That means it should be 61 and 63, and we can conclude that 3 revolutions per second. समझा क्या ठीक से? 3 revolutions per second. Very good. Yes. So here it is going to be 3 hertz. इसको बोलते हैं hertz, right? Revolutions per second माना hertz. Remember. So frequency is found out. तो frequency हमको मिल गया 3 hertz, no doubt. What about the period? Just period find करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी करे उल्टा कर दो, क्योंकि देखो तीन तीन रिवॉल्यूशंस एक सेकंड में हो रहे ना, तो इसका मतलब, सॉरी, हाँ, 3 रिवॉल्यूशन एक सेकंड में हो रहे, इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना सेकंड लग रहा है? 1/3 सेकंड लग रहा है। तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं पीरियड विल बी इक्वल टू 1/3 सेकंड, or simply just use the formula t equal to 1 upon n and put this value of n here and get 1 upon 3, that is in second. So if you work out it, we can get it as 0.33 recurring seconds, and this is going to be the period of revolution of that particle. It's very simple. See here. Okay, and another example. Suppose a merry-go-round takes 10 seconds to complete 5 rotations.
Okay, find its period and frequency. Yes, do it fast. Put it in chat box. एक मेरी-गो-राउंड है जो 10 सेकेंड में 5 रोटेशंस कंप्लीट करता है. बहुत ज्यादा फास्ट हो गया एक्चुअली वो, बट चलो ठीक है. जस्ट इमेजिनरी मेरी-गो-राउंड. Suppose it takes 10 seconds to complete 5 rotations. How will you get the period then? तो देखो, पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको. पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन. ओके, तो 10 सेकेंड्स में अगर 5 रोटेशंस कंप्लीट करता है तो मुझे बताओ एक रोटेशन कितने सेकेंड में कंप्लीट करेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमको मिलेगा 2 सेकेंड्स. करेक्ट है? यस. एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? हाउ वी कैन गेट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है? नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड ना. तो देखो 5 rotations in 10 seconds. So number of rotations has to be put in the numerator 5, and seconds मतलब time जो है that is to be put in the denominator here 5 by 10, which comes out to be 1 by 2, or we can say it will be 0.5 hertz. Okay, 0.5 hertz. It's okay. 0.5 एक भी complete नहीं है. Frequency जरूरी नहीं कि वो whole number ही होना चाहिए. It can also be in the fractions, no doubt. When the period is in whole numbers, frequency will be fraction, and when frequency will be the whole number, period will be the fraction, obviously, because they are reciprocals of each other. Okay, yes. So these two examples are sufficient to understand what is the period and how the frequency and period can be calculated from the given things. Okay, so using this you can give me the oral answers of some questions. Tell me what is the period of second hand of a clock? First, put it in the chat box. What is the period of second hand of a clock? Yes, do it fast. It's very simple question. What is the period of revolution of second hand of a clock? घड़ी का जो काटा होता है उसमें 3 कांटे होते हैं, पता होगा तुमको. एक होता है सेकेंड हैंड, दूसरा होता है मिनट हैंड, तीसरा फिर होता है आवर हैंड. करेक्ट है? सबसे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं आवर हैंड. उससे मीडियम साइज का जो होता है उसको बोलते हैं मिनट हैंड, राइट. और सबसे लंबा जो होता है वो होता है सेकेंड हैंड. तो उस सेकेंड हैंड की हम बात कर रहे हैं. So what is the time period of second hand of a clock? Very good. It's going to be 60 seconds. Correct. Okay. If I ask what is the frequency of second hand of a clock, then period तो चलो ठीक है, period उसका हो गया 60 seconds, no doubt. But what is the frequency? So frequency will be 1/60. Are you convinced with this? Hertz. Do you agree with this? Okay. Second hand का period होगा 60 seconds और उसका frequency जो होगा 1/60 hertz. No problem. Okay. What about the minute hand? ये second hand का हो गया, ठीक है. minute hand का क्या बोल सकते हैं? What is the period and frequency? Period will be 1 hour, क्योंकि देखो minute hand जो है वो पूरा चक्कर कभी काटता है 1 घंटे के बाद पूरा चक्कर काटता है. तो इसलिए उसका पीरियड हो गया 3600, सॉरी, हाँ करेक्ट है ना, 3600 सेकेंड्स. करेक्ट है, 3600 सेकेंड्स. और यू कैन से कॉल इट एज अ 60 मिनट्स. बराबर, 60 मिनट्स में वो एक पूरा चक्कर काट लेता है. तो उसका फिर फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/3600 हर्ट्ज. ओके, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. ओके, इट इज द कॉमन सेंस. ये कॉमन सेंस से मिले हुए वैल्यूज है हमको, याद से. अच्छा, आवर हैंड का क्या बोल सकते हैं? आवर हैंड, yes, what is the time period of hour hand of a clock? Yes, what is the time period of hour hand of a clock? टाइम पीरियड कैसे निकालना होता है? अभी समझो 12 बजे है, ठीक है. वापस 12 कभी बजेंगे?
वो पूरा जो चक्कर है, आवर हैंड का जो चक्कर है, वो पूरा क्रॉस कब होगा? जरूर 12 घंटे के बाद, है कि नहीं? 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद वापस 12 बजेंगे कि नहीं? अगर अभी 12 बजे है तो 12 घंटे के बाद वापस 12 बजेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी एक्चुअली 12 आवर्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? अच्छा, 12 आवर्स मतलब कितना सेकेंड में अगर कैलकुलेट करेंगे उसको, तो 12 इंटू 3600 करना पड़ेगा। ये मिलता है हमको, याद रखो ठीक से, 86400 seconds, remember. And if you want to find out the frequency, then you have to take the reciprocal of that, and it will actually become 1 upon 86400 hertz. That's it. So this is actually going to be the frequency. That's it. समझा क्या ठीक से? What can we say about Earth? What is the time period of Earth? For the rotation about itself, उसके खुद के अबाउट जो रोटेट होता है, खुद के अबाउट, हाँ हाँ, तो अर्थ जब खुद के अबाउट रोटेट होता है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 24 आवर्स। करेक्ट है, 24 आवर्स, ये हो गया टाइम पीरियड उसका। एंड फ्रीक्वेंसी वी कैन से इट विल बी 1 अपॉन 24 पर आवर, बट इट शुड बी इन द, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, ये गलती हो गया, ये 86400 नहीं होता है, ये होता है 43200। ओके, और ये जो होता है 24 आवर्स का कन्वर्जन जब सेकेंड में, तो वो 86400 सेकेंड्स ये हुआ करता है। और उसकी वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? जरूर 1 अपॉन 86400। ओके, एंड दिस विल बी आवर हैंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर 1 अपॉन लाइक दैट, तो 1 अपॉन 43200 ये बनेगा। ठीक है, ये आवर हैंड का हो गया। चलो ठीक है, पीरियड। और ऑब्वियसली इफ यू कंसीडर द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, then the period will be 365 hours. ठीक है, sorry, 365 days, right? And frequency can be calculated. उसके लिए अभी बहुत झंझट करना पड़ेगा। तो 1 upon 365 into 24 into 60 into 60, ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो भी बनेगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द अर्थ about rotation about the sun. Okay, so in this way we can find out the frequency and time period of any object if you want. Yes, let us move to the next question. अब देखो, सबसे पहले हम जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर करके लेंगे। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली? तो जैसा कि हमने देखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल इन रेडियन traced by the radius vector in a given time. It's called as the angular displacement. Correct है? The question is that what is the angular displacement of second hand of a clock in 15 minutes? Sorry, 15 seconds. Yes, कौन बताएगा? What is the angular displacement of a second hand of a clock in 15 seconds? How will you find out that? Yes, angular displacement we want to find out. See here, if you want to find out the angular displacement of second hand of a clock,
इन 15 सेकेंड्स। सपोज सेकेंड हैंड जो है वो यहाँ पे है, इनिशियली इट्स एट 12 सपोज, ओके, ये ऐसा है। अभी 15 सेकेंड के बाद कहाँ पे जाएगा? नहीं पार्थ, 15 सेकेंड के बाद कहाँ पे जाएगा वो? देखो 15 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अगर 12 पे रहेगा तो 3 पे आ जाएगा कि नहीं 15 सेकेंड के अंदर? तो इसका मतलब वो जो है वो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा, करेक्ट है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री माना रेडियन में कितना बनता है, निकाल सकते हो आराम से। व्हाट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इन रेडियन? तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, बराबर। तो थीटा कैन बी फाउंड आउट by using this 90 degree, but we can convert it into radian and get it as pi by 2. Very good. Okay, pi by 2. So basically 90 degree can be converted into radian by multiplying it by pi by 180. So that 90 just cancels with 180, leaving behind 2 in the denominator, as so as to get this as pi by 2. That's it. Okay. Tell me the another question. What is the angular displacement of an second hand of a clock in 20 seconds? Yes, Shreyas. What is the angular displacement of a clock, second hand of a clock in not 15 seconds but 20 seconds? Tell me fast. 20 seconds में कैसे निकालेंगे? अब देखो 20 सेकेंड में कहाँ पे रहेगा वो? जरूर यहाँ पे रहेगा कि नहीं, 4 डिजिट पे। तो उस समय उसका जो एंगल है वो कितना बनेगा? ये देखो, ये तुमको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे 1 होता है, बराबर, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 3 होता है। तो एवरी एंगल डिवाइड्स दिस राइट एंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, राइट? तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 30, ये बनता है 30 और ये भी 30। तो इसलिए ये टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री, करेक्ट है? यस। तो 120 डिग्री को सिंपली रेडियन में कन्वर्ट करो अभी, तो वो बनेगा 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली ये 62 जा and 63 जा, and hence we get it as 2 pi by 3 as a final. Check. So in this way we can find out the angular displacement of a second hand of a clock in 20 seconds. Acha, tell me what it should be in the 30 seconds. Yes, 30 सेकेंड में कितना होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो 30 सेकेंड में क्या होता है, ये जो सेकेंड हैंड है वो जो यहाँ पे 12 पे होता है वो फाइनली यहाँ पे 6 पे आ जाता है, करेक्ट है? यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो उसका पूरा एंगल कितना कवर हो गया? 180 डिग्री हो गया कि नहीं? वेरी गुड, करेक्ट। सो बेसिकली 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री मीन्स व्हाट? इट विल बी पाई रेडियन। करके देखो, कन्वर्ट अगर करेंगे उसको तो इट विल बी इन द पाई रेडियन। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड हैंड इन 30 सेकेंड्स। ओके, चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो क्या हम इसको यूज करके सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं? यस, कैन यू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक यूजिंग दिस डेटा? यस, वी कैन फाइंड आउट, बिकॉज एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है? एंगुलर स्पीड मतलब एंगल में घूमने का स्पीड, सर्कुलर मोशन के अंदर घूमने का जो स्पीड है वो कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है उसके लिए? देखो थीटा दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, थीटा अपॉन टी। तो अभी देखो यहाँ पे ये पहला जो हमारा एग्जांपल था 15 सेकेंड में उसने कितना एंगल कवर किया? ये देखो पाई बाय 2 इतना एंगल कवर किया, राइट? So we can call it as pi by 2, that is the angle covered, and that is to be divided by these 15 seconds here, which comes out to be pi by 30 second radian per seconds. Okay, radian per second is going to be the unit of angular speed, remember. चलो ठीक है, अगर हमको ये एंगुलर स्पीड दूसरे फॉर्मूला से निकालना है, मतलब बोले फॉर्मूला वही है बट जो थीटा और टाइम के जो अलग वैल्यूज यूज करके अगर निकालना है, जो सेकंड एग्जांपल में हमने लिए थे, ये देखो जब
20 सेकेंड्स में हमने पूछा था उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमको मिला था ये देखो 2π/3 रेडियन, बराबर है। तो अगर हम वो पे डाल देंगे तो 2π/3 यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये 20 सेकेंड्स आएगा, करेक्ट है, ये 20 सेकेंड्स देखो। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको क्या मिलेगा, 2π डिवाइडेड बाय 3 into 20 मतलब 60, which happens to be same as 2 ones are 2 30s are, so it's again π/30 radian per second, correct है। So once again we are going to get the same answer in this way. So even we can find out the angular velocity by using this third values, set of values, that is theta upon t. Basic formula is the same, but if suppose we use this value of theta here and this value of time here, then we can also get the same answer, that is ready-made π/30, that's it, radian per second. And even इससे भी आगे जाके हम ये भी बोल सकते हैं कि थीटा जो है, when this second hand will complete a full rotation in 60 seconds, right? 60 सेकेंड में वो फुल रोटेशन कंप्लीट करता है। एंड व्हाट इज द एंगल करेस्पॉन्डिंग टू फुल रोटेशन, 2π, right, रेडियन। So if you use this here, theta upon t, so theta is going to be 2π for the full rotation, and time required is going to be 60 seconds for the full rotation. So if you consider these full rotation values, once again we are going to get the same answer, that is π/30 radian per second, correct है। So in this way we have found out the angular velocity of a second hand in this way, okay। चलो ठीक है, अगर हमको उसको डिग्री पर सेकंड में निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, डिग्री पर सेकंड ना। तो उसके लिए सिंपल सी बात ये है, देखो थीटा अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इफ यू वांट इट इन डिग्रीज पर सेकंड देन जस्ट यूज एनी वन वैल्यूज हियर इन डिग्रीज। 90 का वैल्यू ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यूज करो, और 15 सेकेंड ये उसका टाइम का वैल्यू यूज करो, जिससे हमको मिल जाएगा आराम से, थीटा के बदले डाल दिया 90, yes, and that is to be divided by time, which is 15 seconds, so that we get this as a 15 ones are 15 six are, and hence we get this as a 6 degree per second, okay, yes, डिग्री को ऐसा लिखेंगे 6 डिग्री पर सेकेंड, ऐसा ये ठीक होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने सेकेंड हैंड का निकाल लिया, एंगुलर स्पीड भी निकाल लिया और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, नो डाउट। चलो ठीक है, लेट अस try to find out the same thing for a minute hand. Find angular speed of minute hand. Can you find out? Yes, how can we get the angular speed of minute hand? Suppose this is a minute hand, okay, and how much time it requires to complete this π/2 radian angle, ये पूरा π/2 रेडियन एंगल कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है बताओ, मिनट हैंड को, 15 मिनट, है कि नहीं, वेरी गुड, 15 मिनट। तो 15 मिनट के अंदर वो 90 डिग्री कवर करता है। तो देखो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री, मींस इट्स गोइंग टू बी π/2 रेडियन, राइट, एंड टाइम इज गोइंग टू बी 15 मिनट्स, एंड व्हाट इज 15 मिनट इक्वल टू 15 multiplied by 60 seconds, which happens to be actually 900 seconds, correct है। So if we use these values here in this formula for omega, which is theta upon t, then we can be able to find it out as theta is equal to π/2, and that is to be divided by 900, so that we get this as π/2 divided by 900. How much it is should be 5 divided by 2 9 are 18 ना, तो 1800 radian per second, that's it। So this is actually going to be the angular velocity or angular speed of minute hand, we can see it clearly, okay। Can you tell me what is the angular displacement? देखो ठीक से, be careful, what is the angular displacement of a minute hand in
10 minutes. Yes, who can answer this? What is the angular displacement of a minute hand of a clock in 10 minutes? 10 मिनट के अंदर एंगुलर मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? पुट इट इन चैट बॉक्स फास्ट. देखो 10 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर करता है? देखो 5 मिनट में इधर आ जाता है और 5 मिनट में इधर आ जाता है. हो गए 10 मिनट. ये देखो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, कितना होगा टोटल? 60 डिग्री होगा कि नहीं? जरूर. तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. बट we don't want it in degrees, we want it in radian. So just multiply it by pi by 180 and get it as 60 multiplied by pi by 180. So 60 ones are 63 are, and hence we get it as pi by 3 radian per second. Correct hai kya? So in this way we can find out the angular displacement of a minute hand in 10 minutes. Check. Okay, one more technique is there. See here, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देखा. देखो इधर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये तो देख लिया. अगर इस टी को उस तरफ लेके जाओ तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा कि नहीं? जरूर. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. अच्छा, ओमेगा तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी. ओमेगा कितना है? ये देखो इधर पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द ओमेगा. Okay, if you put it here, that is pi by 1800, and that is to be divided by time. What is the time given here? It's 10 minutes, right? So 10 minutes मतलब कितना? तो time के बदले क्या आएगा? 10 multiplied by 60, because 1 minute corresponds to 60 seconds, and that's why it will be 10 minutes means 10 into 60 seconds. Okay, so if we just work this out, then we can say that this 0 will get cancelled, this another 0 will also get cancelled, and what will be left with is simply ये 6 जो है वो 6 को भी हम reduce कर देंगे 18 के साथ, leaving behind 3 here, and we'll get it as pi by 3 radian as a final. Correct है? So we can get this angular displacement in this way also. Correct है? Okay. Just tell me, what is the yes, what is the angular displacement of, okay, what is the angular displacement of a minute hand of a clock in not 10 minutes but 45 minutes? अभी कौन बताएगा? Put it in chat box fast. 45 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? Very good, 270 degree. Okay, why? Because in 45 minutes actually the minute hand starts from this point and comes to this point here. यहाँ पे आ जाता है कि नहीं वो? तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि in this case the angular displacement will actually be 270 degree. and 270 डिग्री मतलब ही अगर रेडियन में देखेंगे ठीक से तो वो रेडियन में बनता है 3 pi by 2 radian. Okay, so we can say that angular displacement here will be 270 degree, and 270 degree stands for 270 multiplied by pi by 180, which happens to be actually 92 and 93 so that we get this as 3 pi by 2 radian. That's it. Okay, अच्छा, अभी मुझे बताओ, what is the angular displacement of minute hand of a clock in 3 hours? अब ये करके दिखाओ. This is a challenge to all. 3 hours.
3 घंटे के अंदर मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ढूंढ के निकालो। जल्दी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के निकालना है, थीटा ढूंढ के निकालना है तुमको। वेरी गुड, 6 पाई, करेक्ट। बिकॉज सी हियर एक सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, देखो ठीक से, कि अगर किसी भी मिनट हैंड का अगर एक चक्कर वो कंप्लीट करता है, ओके, एक पूरा अगर सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है, 2 पाई बनता है। बट नाउ इट्स इन 3 आवर्स ना, 3 घंटे के अंदर क्या करेगा वो, एक चक्कर तो कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर से दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा, और उसके बाद वापस तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा। अब ऐसे 3 चक्कर कंप्लीट करने के बाद एक चक्कर के अंदर 2 पाए, दूसरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद 4 पाए, और तीसरा करने के बाद 6 पाए, इतना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे थीटा जो है तो वो हमको निकालना होगा इस तरह से 6 पाए। और वी कैन से एक चक्कर के कंप्लीट करने के बाद वो 360 डिग्री एंगल से घूमता है, बराबर। तो 360 360 प्लस 360, ऐसा अगर 3 बार जोड़ दो तो वो बन जाएगा 1080, करेक्ट है। दिस इज 1080 डिग्री। But if you want to convert it into radian, then we will have to multiply it by pi by 180 as usual. And if you just simplify this, then we know that this 0 will get cancelled. And 18 के टेबल में 6 नंबर पे 108 है, चेक करो। तो इसलिए फिर से वही आंसर हमको मिलेगा 6 पाई, that is going to be the in radian, that is the angular displacement of a minute hand in 3 hours. Okay. So in this way, we can find out the angular displacement, angular velocity and angular acceleration. Okay, angular acceleration का हमने कुछ किया नहीं आज, चलो ठीक है। आज फिलहाल हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के ऊपर फोकस किया, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जो हमने देखे। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल के लेक्चर में, हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के भी कुछ कंसेप्ट्स जो है तो वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो, hope so you have understood all of you. So let us stop here. Thank you all of you.